अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ज़्यादातर इंडिया में मुस्लिम ख़ातून घरों पर ही नमाज़ अदा करती हैं और मस्जिद में जाने के बारे में उन्हें ज़्यादा कुछ पता नहीं है, तो डॉक्टर जाकिर नाइक का ये बयान ज़रूर सुनिएगा। सो स्टार्ट करते हैं। Hi, my name is Chloe. I'm from Canada. I'm a student here in Mumbai. And my question is why women are not accepted into mosque in India? Sisters asked a very good question, that why are women not accepted in the mosque in India? So India has to blame, not the Quran and Hadith. I told in my lecture, do not judge Islam by looking at what the Muslims do or what the Muslim society does. Judge Islam according to the Quran and the Sahih Hadith. Our beloved Prophet Muhammad said, there's a hadith in Sahih Bukhari, the Prophet said, do not prevent the female servants of Allah from going to the mosque. Another hadith in Sahih Bukhari, volume number 1, in the book of Salah, just a few hadith before that, he said that if the female servants, that means the Muslim women, servants of Allah, if they want to go to the mosque at night, do not prevent them. Now, it is the Indian culture. Now, when we allow a woman to go in the mosque, we see to it that she gets equal but separate facilities, separate entrance, separate place of ablution, wudu, separate place of prayer. We don't believe in intermingling, like when you go to the church or when you go to the temple. Why? Because in our salah, sister, when we pray, we believe in equality of human beings. We stand shoulder to shoulder. Irrespective whether the man next to me is black or white, yellow or brown, king or pauper, I stand close to him, shoulder to shoulder. Now, if a lady is there, close to me, shoulder to shoulder, the medical doctors tell me the temperature of the lady is 1 degree higher. If I pray standing with her shoulder to shoulder, I will concentrate more on her than Allah subhanahu wa ta'ala. Therefore, separate but equal facility. Separate entrance, separate place of wudu. You have to wash yourself, wash your legs. You can't do in front of the mahram. So in India, most of the mosques don't have. But alhamdulillah, it has started. I know of several mosques in Bombay where they have facilities for ladies. We have several mosques in South India where I've been to there. But I do agree with you, it is very less in percentage. If you go to Saudi Arabia, almost all the mosques, more than 95% of the mosques, they have facility for women. More than 95. Whether it's 99, 99.9, I don't know. More than 95% of the mosques have separate facility for ladies. You go to London, you go to USA, most of the foreign, it is India. So the problem is with the Indian Muslims. Therefore, in my talk, I say that see to it, there should be a separate facility for the women. Separate but equal facility so that they too can pray to Almighty God in the mosque. Hope that answers the question, sister. Thank you. मुझे लगता है कि जो इंडियन मुस्लिम ख़ातून से ज़्यादातर उन्हें पता भी नहीं होगा कि औरतों को भी मस्जिद में जाकर नमाज़ पढ़ने की परमिशन है। और एक वीडियो सुनिएगा, ये डॉक्टर जाकिर नाइक का। स्टार्ट करते हैं। बहन का सवाल है कि इस्लाम में औरतें मस्जिद में जाके नमाज क्यों नहीं पढ़ती और नमाज पढ़ने का तरीका अलग क्यों है और ईदगाह में क्यों नहीं जाती। कुरान मजीद में बहन किधर भी नहीं लिखा है कि औरत मस्जिद में नहीं जा सकती। वो हमारे इंडिया पाकिस्तान में है, इसलिए इस्लाम को देखने के लिए इंडिया को मत देखो, पाकिस्तान को मत देखो, कोलकाता को मत देखो, कुरान को देखो। कई हदीस है सही बुखारी में, जिल्द नंबर 1 आखिरी हदीस, डू नॉट प्रिवेंट द फीमेल सर्वेंट फ्रॉम गोइंग टू द मॉस्क, मतलब मोमिना को मस्जिद में जाने से मत रोको, अल्लाह के रसूल फरमाते। आप पढ़ेंगे सही बुखारी जिल्द नंबर 1 हदीस नंबर 824, उसमें अल्लाह के रसूल फरमाते कि डू नॉट प्रिवेंट द वुमेन टू गो टू द मॉस्क इवन एट नाइट। अगर रात को भी अगर वो चाहते कि मस्जिद में जाना चाहते तो मत रोको। तो मस्जिद में औरतें जा सकते हैं। वो अभी इंडिया पाकिस्तान में रोकते, क्यों रोकते उनसे पूछिए। कुरान और हदीस में तो लिखा है जा सकते हैं। कलकत्ता में भी एक आध मस्जिद है क्या नहीं भाई? भाई 2 मस्जिद है, भाई साहब बोलते 2 मस्जिद है। एड्रेस ले लेना आप बाद में। 2 मस्जिद है जहाँ खवातीन जा सकते। इंशाअल्लाह कल 4 होंगी, परसों 10 होंगी। इंशाअल्लाह सब मस्जिद में इख्तियार होंगे। इक्वल बट सेपरेट फैसिलिटी। और अल्लाह के रसूल फरमाते उस तरीके से पढ़िए जिस तरीके से आप मुझे देखते हैं। तरीका यकसा है, औरत और मर्द का पढ़ने का तरीका यकसा है। आपको दूसरा सवाल, ईदगाह में क्यों नहीं जाते?
اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ جب آپ عید نماز کے لیے جاتے ہیں اپنے بیوی کو بھی لے کے جاؤ, بچوں کو بھی لے کے جاؤ, اگر آپ کی بیوی حیض میں ہے پھر بھی لے کے جاؤ. مطلب آپ کی بیوی نماز نہیں پڑھ سکتی ہے, حیض میں ہے, if she is having period, یہ ٹیکا بھلے وہ نماز نہیں پڑھے تو عیدگاہ میں تو جانے کا اسپیشل انسٹرکشن ہے. اگر حیض میں پھر بھی جا سکتے تو یہ غلط فہمی ہے کہ عورت مسجد میں نہیں جانا چاہیے. مجھے یہ لگتا ہے کہ عورتوں کو ضرور مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے جانا چاہیے, اور ساتھ ہی اپنی دیگر خواتین کو بھی اپنے ساتھ لے جانا چاہیے اور خواتین کو آگاہ کرنا چاہیے. اور آپ کی کیا رائے ہے, کمنٹ کیجیے گا.